और हमको पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होता है जो कि दिया जाता है फोर्स F इज इक्वल टू क्यू वी बी इन दिस वे. बट सिंस दिस कंडक्टर इज केप्ट ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो यहाँ पे कंडक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे भले साइन थीटा फॉर्मूला में साइन थीटा है बट यहाँ पे साइन थीटा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा. ये देखो ये साइन थीटा, but theta is going to be 90 and that's why sin 90 which becomes 1, and that's why we can say that the force, total force acting on this conductor will actually be given by q into v के बदले क्या आएगा, l upon t आएगा, and that is to be multiplied with b into sin theta which is 1. Okay, so that we can get the total force to be simply equal to q into q upon t into l into b. But as we know that this q by t मतलब चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, करंट हुआ करता है, इसलिए इसको हम लिखेंगे करंट I into L into B. But this is the formula for finding the force acting on a current carrying conductor which is moving which is kept perpendicular to the magnetic field. Remember, अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा हुआ है तो उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बिल्कुल, नो डाउट. बट in the case when this magnetic field this conductor is not kept perpendicular to the magnetic field, suppose the magnetic field is like this in the rightward direction, and suppose the conductor is actually kept at some angle inclined with the magnetic field, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ कंडक्टर जो है वो ऐसे एंगल पे इंक्लाइंड रखा हुआ है, तो देखो ठीक से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड अगर वो इस तरह से रखा हुआ है तो उस केस में क्या होगा, देखो ठीक से, in that case we can once again divide this whole conductor to be in the form of large elements like this. तो ये पूरा जो कंडक्टर है इसको हम लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे और उसमें से एक एलिमेंट जो है सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक जिसका मास जिसका चार्ज जो है तो उसको हम एज्यूम कर लेंगे dq suppose, and that dq charge passes further in the time dt, suppose it takes a small time dt to move through this distance, that is dl. ठीक है, तो ये dl इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए अगर उसको dt इतना टाइम लगता है और dq चार्ज को, तो हम देख सकते हैं आराम से कि the force acting on this charge dq which will be df actually, so will be given by dq into v, that is the velocity, into b into sin theta, correct है, no doubt, and then this df will be actually equal to dq into v, where v stands for velocity which happens to be actually the distance upon time, so we can replace it by that, so dl by dt ये बन गया into b as it is into sin theta also as it is, and then we can see this will be df which is going to be equal to, अभी इसको थोड़ा रीअरेंज करो तो dq by dt एक ब्रैकेट में हमने डाल दिया और ये जो dl है तो वो dl सेपरेट रखा और b into sin theta सेपरेट ब्रैकेट में आ गया, चलो ठीक है, but this dq by dt can be replaced again by current, that is I we can say, and this I into dl into b into sin theta, this actually becomes the formula for the force, small force which is acting on a small element of this current carrying conductor. Okay, but in order to get the total force we will have to integrate this equation over the whole conductor, तो इसलिए इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको टोटल फोर्स मिलने वाला है, so the total force acting on this conductor can be obtained to be integration of df which is going to be integration of I into dl into b into sin theta, where this I and b sin theta are going to be actually the constants, right, and hence it can be taken out, so I को हमने बाहर लिया, b को बाहर लिया, sin theta को भी बाहर लिया और यहाँ पे सिर्फ dl का इंटीग्रेशन बचा अंदर, और जो कि हमको पता है ऑलरेडी कि इंटीग्रेशन ऑफ dl happens to be actually L, that is the length of the conductor
which is kept inside this magnetic field. So we can say that this will be I a b into sin theta into यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या आएगा, l आ जाएगा. सो ये l अगर हमने यहाँ पे रिप्लेस किया और इसको अगर और सिस्टमेटिकली लिखा तो हमको मिल जाएगा I L B sin theta, and this can also be written as I into, in vector form if we want to write it as, then we can get it as I into L bar cross B bar. But this vector form is rarely used to find out the direction of the force. Instead of that, we consider this formula as a magnitude of the force and find out the direction of that force by a separate rule, which is called as the Fleming's left hand rule. Remember, what does this Fleming's left hand rule tells us? If we have three directions represented by FBI, okay, FBI मतलब क्या है यहाँ पे? F मतलब force, B मतलब magnetic induction, and I means current. If our fingers of left hand are arranged in such a way that the four fingers expresses or points out the direction of magnetic induction, and middle finger points in the direction of the current, then we can say that the force will point the direction of force. Remember, तो फोर फिंगर मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन होना चाहिए, मिडिल फिंगर मतलब करंट होना चाहिए, करंट, और मेन फिंगर जो है, थंब जो है, तो वो थंब क्या बनेगा, एक्चुअली फोर्स का डायरेक्शन हमको देगा. याद रखिए ठीक से. दिस इज द Fleming's left hand rule. I will repeat again. If the forefinger points in the direction of magnetic field, middle finger points in the direction of current, then the thumb will point in the direction of force. So using this Fleming's left hand rule, we can find out the direction of the force if we know the directions of the current and magnetic induction in any situation. और तीसरा जो सिचुएशन हमने देखा था, तो तीसरे सिचुएशन के अंदर अगर मान लो कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, जिसका जो स्ट्रेट नहीं है बल्कि कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है. देखो ठीक से, suppose the magnetic field, in this magnetic field the current carrying conductor is kept, and that current carrying conductor starts from this point A here and is like this. कैसा भी हो सकता है वो, इस टाइप से, ठीक है. ये पॉइंट सपोज B है, ठीक है. अभी इसमें होता है ऐसा है ना कि ए के अंदर करंट एंटर कर रहा है. कितना करंट एंटर कर रहा है, I इतना करंट फ्लो हो रहा है. So in that case, we will again divide this whole element, whole conductor, into large number of small elements like this, and we will apply this formula for the force on one of these elements of length dl. Suppose ये dl length का एक element है, suppose dl bar actually, because it will be a vector, correct है, तो वो हमको consider करना है. dl bar is going to be a vector which is in the direction of this element, okay. And at the same time, suppose that this dq is the charge which passes in time dt through this length dl here. Then we can say the small force df bar acting on this small element due to the charge dq passing through it in a time dt will be actually dq into v bar cross b bar, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास है, नो डाउट. अभी इसको यूज करके हम इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं आराम से, क्योंकि हमको पता है v बार मतलब क्या होता है. तो v बार मतलब होता है dl बार अपॉन dt, करेक्ट है.
तो ये हमको मिल गया, and that is to be multiplied with cross product of this to be taken with b bar as it is. Okay, ये dt को हम simply dq के नीचे डाल देंगे, जिससे वो df bar बन जाएगा dq upon dt. It's a scalar, and that is multiplied with dl bar, which is a vector, and its cross product is taken with b bar here, which is again a vector. So here, but we know that this dq by dt is actually going to be current I into dl bar cross b bar is left inside here, and then we will have to integrate this equation over this entire conductor so as to get the total force acting on this conductor, which happens to be actually integration of this whole thing, that is I into dl bar cross b bar. Correct है? बट यहाँ पे हमको ये एक बात याद रखनी है कि इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट्स जो है तो वो सारे बाहर आ जाएंगे, नो डाउट, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू बी केयरफुल दैट ऑर्डर जो इंटीग्रेशन का ऑर्डर जो क्रॉस प्रोडक्ट का है वो इंटरचेंज नहीं होना चाहिए. द ऑर्डर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, इस क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो पहला है फर्स्ट फैक्टर है तो वो फर्स्ट फैक्टर ही बनना चाहिए, और जो सेकंड फैक्टर है वो सेकंड फैक्टर ही रहना चाहिए. सो ये dl बार क्रॉस b बार को हमको किसी भी हालत में उल्टा नहीं करना है, b बार क्रॉस dl बार नहीं करना है. तो बेस्ट सॉल्यूशन यही है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि f बार becomes actually equal to I, which is a constant out, and here we'll integrate. So integration of dl bar will be kept here as it is, and the cross product of this integration with b bar will be kept after finding this integration actually. And if we focus on finding this integration here now, then we can see अभी ऐसे जो सारे एलिमेंट्स है, छोटे छोटे एलिमेंट्स जो है, तो उनको हमको इंटीग्रेट करना है. तो इंटीग्रेट करना मतलब यहाँ पे देखो ठीक से, इफ वी एक्सप्रेस ऑल दिस एलिमेंट्स बाय यूजिंग अ वेक्टर, तो इनको अगर हम एलिमेंट्स को अगर हम वेक्टर्स के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करते हैं इस तरह से, तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो यहाँ पे एक वेक्टर के द्वारा यहाँ पे एक्सप्रेस किया जाएगा. ये बन गया हमारा फर्स्ट वेक्टर, ये बन गया हमारा सेकेंड वेक्टर, this can be the third vector, this can be the fourth one, this can be the fifth one, and then we can just get the different vectors like this. And all these vectors, when added up together using triangle law or parallelogram law, will give us a resultant. तो हमने 11th स्टैंडर्ड में वेक्टर्स का रिजल्टेंट का फॉर्मूला देखा है, याद होगा आपको. तो दो वेक्टर्स का अगर हमको रिजल्टेंट फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, initial point of the first vector and the final point of the last vector is to be simply matched with each other. तो एक वेक्टर हमको ड्रॉ करना होता है जो फर्स्ट वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करेगा और लास्ट वेक्टर के फाइनल पॉइंट की तरफ पॉइंट आउट करेगा, and this vector will actually be the resultant of the vectors. So all these vectors will produce a resultant which is given by this vector here, which is a single one. And this vector will have its effective length, which is going to be the distance between this point A and point B. Okay, तो इस point A और B के बीच में जो distance बनता है, तो वो distance ही actually इस conductor का effective length कहलाता है. And if that length is denoted by L bar, okay, इसको अगर हमने L bar से अगर denote कर दिया, तो फिर हम ये equation जो है वो next step में आराम से लिख सकते हैं इस तरह से. तो it will be I into L bar cross B bar. समझा क्या ठीक से? So here the equation will be I times L bar cross B bar, where L bar stands for the effective length of this conductor. तो इस कंडक्टर का ये इफेक्टिव लेंथ होना चाहिए L bar जो है. और इफेक्टिव लेंथ कैसे निकालने का, अगर टेढ़ा मेढ़ा करंट कंडक्टर भी अगर है तभी भी उसमें क्या करने का, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों को बिल्कुल ज्वाइन करने का सीधा स्ट्रेट लाइन वेक्टर से, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड या उसका जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, just like a displacement, that will be the effective length of that conductor, and that length will be used in order to find out the total force acting on this conductor due to the magnetic field. Okay, so these are the three formulae we are going to remember these correctly. Okay, now we'll see the application of this. एक simple सा application हम यहाँ पे देखेंगे. See here, if suppose there are the two conductors, see, if there are two current carrying conductors which are kept parallel to each other, suppose like this, okay, and they are carrying the current in the same direction, suppose,
तो ये दो पैरेलल कंडक्टर्स है और इनके अंदर सेम करंट या चलो सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है। सेम करंट जरूरी नहीं है। सपोज इस फर्स्ट वाले कंडक्टर के अंदर I1 इतना करंट फ्लो हो रहा है और सेकंड वाले कंडक्टर के अंदर सपोज I2 इतना करंट फ्लो हो रहा है, और समझो कि इन दोनों कंडक्टर्स का जो लेंथ है तो वो लेंथ मान लो L है। L is going to be the length of each conductor. Okay, so what is our aim here is we have to find out the force between two parallel conductors. Okay, जो पैरेलल दो कंडक्टर्स है उनके बीच में जो फोर्स होता है तो वो हमको निकालना है। हाउ विल कैन फाइंड इट आउट? तो अभी देखो ठीक से। So in order to find out the force acting between two parallel conductors, suppose that the current I1 and I2 is flowing through these two conductors, and because of that current they will produce a magnetic field in the region here. तो अभी सपोज यहाँ पे ये जो कंडक्टर है, फर्स्ट वाला कंडक्टर जो है उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे इस रीजन में ये देख सकते हो ठीक से, जहाँ पे ये सेकेंड कंडक्टर रखा हुआ है तो उस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। ठीक है, देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हियर ड्यू टू दिस फर्स्ट कंडक्टर। तो ये जो फर्स्ट कंडक्टर है उसमें से फ्लो होने वाले करंट की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जो कि जिसको हम सपोज B1 बोल सकते हैं, एंड दैट विल बी इनवर्ड्स। गेटिंग व्हाई? यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इनवर्ड्स होगा। क्यों? कौन बताएगा? राइट हैंड रूल। अप्लाई द राइट हैंड रूल ऑन I1। इफ यू टर्न योर फिंगर्स, मतलब थंब जो है वो अगर I1 के डायरेक्शन में अरेंज करो, और if you see the magnetic field at point where I2 is placed, then we can get that the magnetic field will be of magnitude B1. So suppose that B1 is the magnitude of magnetic field here. ये तो ये B1 is the magnitude of the magnetic field produced at this point here, but it will be produced due to I1 and it will be directed inwards into the plane of this figure. And what will be B1 expressed as? How we can find out this B1? We know that the every straight current carrying conductor, अगर एक करंट फ्लो हो रहा है किसी स्ट्रेट कंडक्टर में से, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर जो डिस्टेंस r पे है तो उसकी वजह से वहां पे उसका जो मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा होता है वो इस फॉर्मूला से दिया जाता है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। याद है ये फॉर्मूला? तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है तो वो डिस्टेंस अगर मान लेते हैं r है सपोज, ठीक है। So the distance between these 2 points, two conductors, is supposed to be r. ये suppose distance r है मान लो। ठीक है, so ये r डिस्टेंस है। तो इस r डिस्टेंस पे रहने वाला जो पॉइंट है वहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन कितना बनेगा तो हम निकाल सकते हैं आराम से। इट विल बी म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई r। करेक्ट है। सो दिस इज गोइंग टू बी द मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर on the at the points where second conductor is kept. Okay, yes, okay, so this is the magnetic induction produced due to the first conductor at second conductor, and it is directed inwards. Okay, we can denote it by the cross, okay, surrounded by a circle. Yes, now in this conductor the current carrying conductor I2 is placed here, right है।
तो यहाँ पे I2 जो कंडक्टर है, I2 करंट कैरी करने वाला कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, बराबर है। तो उसकी वजह से जो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट सेकेंड कंडक्टर, और वी कैन से B ड्यू टू करंट इन A और ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड B1 कितना होगा। तो उसके लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कि कोई भी मैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा जाता है तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है तो उसको हम बोल देंगे F21 और वी कैन से FBA, ओके। Force acting on B due to A, it will actually be equal to I2 into L into B1, करेक्ट है। क्योंकि ये मैग्नेटिक इंडक्शन किसने पैदा किया, फर्स्ट कंडक्टर ने पैदा किया, इसलिए उसको हम B1 बोल रहे हैं। और करंट जो फ्लो हो रहा है वो तो I2 मतलब सेकेंड कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, इसलिए यहाँ पे I2 हम यूज करेंगे, जिससे हमको मिलता है I2 into L into B1, where B1 is actually going to be simply mu naught I1 upon 2 pi r, करेक्ट है। जिससे हमको ये मिल जाता है FBA which is going to be equal to I2 L mu naught I1 upon 2 pi r. So we can just combine this all these things here and say that it will be mu naught I1 I2 upon 2, अच्छा L भी तो है ना, L and upon 2 pi r, correct है। So this is actually going to be the total force acting on the second conductor due to the current in first conductor. Okay, just consider this situation around. ये situation जो है वो थोड़ा सा उल्टा करो। अभी ऐसा assume करो कि ये जो करंट I2 जो है, तो I2 की वजह से भी तो कोई मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा जरूर, बराबर। एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू दिस I2 विल, अब ये I2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो कि I1 के रीजन में पैदा होगा। तो सपोज I1 जहां पे खड़ा है तो उस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है इस I2 की वजह से, तो उसकी अगर बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कौन सी डायरेक्शन में वो होगा, निकाल सकते हैं आराम से। देखो फिर से राइट हैंड रूल यूज करो। देखो I2 के अंदर करंट इस तरफ ऊपर तरफ फ्लो हो रहा है, सो इफ यू अप्लाई द राइट हैंड रूल हियर देन यू विल गेट दैट at the points where I1 is placed the magnetic induction will be directed outwards, करेक्ट है। आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक इंडक्शन होगा जिसको हम B2 बोल के रख देंगे, ठीक है। so that B2 will be actually outwards and that's why we can denote it by a small dot surrounded by a circle, remember। तो ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो हमको डॉट से डिनोट करना पड़ता है, which is surrounded by a circle, okay, like this. This dot surrounded by circle means the magnetic field is going to be there outwards, okay, yes. So this is going to be the magnetic induction at the point where magnetic this I1 is placed, right, okay। तो अभी यहाँ पे देखो इसमें कि मैग्नेटिक इंडक्शन का जो यहाँ पे वैल्यू होगा उसको हम B2 बोल के रख सकते हैं, but in this magnetic induction the current carrying conductor I1 is placed here, so because of that it will experience some force. But first of all we'll try to find out the magnetic induction due to current in second conductor, that is I2. So it will be given by B2 which is equal to mu naught into I2 upon 2 pi r, and this magnetic induction is going to be there outwards, करेक्ट है, yes। तो अभी इसमें ये मैग्नेटिक इंडक्शन तो हमको चलो मिल गया, नो डाउट, बट एट द सेम टाइम हाउ कैन वी फाइंड आउट द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट कंडक्टर। तो देखो फोर्स ऑन कंडक्टर A ड्यू टू द करंट इन द कंडक्टर B will be denoted by FAB, ओके। FAB उसको हम डिनोट कर देंगे, तो FAB कितना होगा, so it will actually be equal to ILB, ठीक है नहीं,
ILB sin थीटा, ये वाला फॉर्मूला हमको यूज करना है। तो इसमें I लेकिन किसका, करंट जो फ्लो हो रहा है वो फर्स्ट कंडक्टर में से फ्लो हो रहा है, और लेंथ तो चलो दोनों का सेम ही है L, लेकिन मैग्नेटिक इंडक्शन किसने पैदा किया, सेकेंड कंडक्टर ने पैदा किया, दैट इज B2 वी कैन से। So if we say this FAB will actually be equal to I1 into L into B2, तो B2 कितना होगा, तो देखो यहाँ पे it will be mu naught into I2 upon 2 pi r, yes, and if we just simplify this still further, then we can be able to get that FAB is going to be equal to simply mu naught into I1 into I2 into L upon 2 pi r, and this is actually going to be the force acting on the first conductor due to second conductor. If you compare this equation with the equation just we have derived now, we can see clearly that both of these equations are going to be the same only. देखो mu naught I1 I2 L upon 2 pi r, and here it is mu naught I1 I2 upon 2 L upon 2 pi r. So in this way we can get that both of these equations are going to be the same, and hence we can say that the force between two parallel conductors, okay, अगर मान लो ये एक कंडक्टर है और ये दूसरा कंडक्टर है, ठीक है, तो अभी इन दोनों कंडक्टर्स के अंदर जो फोर्स काम करता है, तो वो फोर्स इस फॉर्मूला से दिया जाता है, जिसको हम लिख सकते हैं आराम से, दैट इज F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L upon 2 pi r. It's that simple. And if you want to find out the force per unit length, we can also do that. तो उसके लिए हम देख सकते हैं आराम से, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर हमको निकालना है तो उसके लिए इस लेंथ को नीचे लेके जाना पड़ेगा उस तरफ, जिससे हमको मिलेगा फोर्स पर यूनिट लेंथ विच इज गोइंग टू बी एक्चुअली म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 pi r, करेक्ट है, and then we can just get this force per unit length replaced by small f, which stands for the force per unit length simply. तो force per unit length का फॉर्मूला क्या होगा, mu naught I1 I2 upon 2 pi r. That's simple. So in this way we can get the expression for the force per unit length between the two parallel conductors carrying the current in the same direction. Yes, one more thing is to be discussed here is that where this force will be directed, तो यहाँ पे force कौन से डायरेक्शन में होगा तो वो भी निकालो। देखो ऑन दिस सेकेंड कंडक्टर, ये जो I2 करंट कैरी करने वाला जो कंडक्टर है, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए इनवर्ड्स है, तो उसके लिए फोर्स का डायरेक्शन कैसे मिलेगा हमको, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, FBI, where B मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन, तो मैग्नेटिक इंडक्शन इज इनवर्ड्स, राइट, so just point this forefinger in the inward direction and turn your middle finger in the upward direction so as to match it with the current. So what we expect is the force will be leftwards, correct hai? So force acting on this conductor due to this first conductor will actually be directed leftwards. समझा क्या ठीक से ये बात, कैसे आया वो फोर्स लेफ्टवर्ड्स? Okay, so we can show this force in the diagram by this leftward arrow here in this way. So this is the direction actually of FBA. समझा क्या ठीक से, FBA का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। अभी अगर देखते हो, अगर हमने यही राइट हैंड रूल अगर यूज किया ऑन दिस फर्स्ट कंडक्टर, तो फर्स्ट कंडक्टर जहाँ पे खड़ा है तो वहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन एक्चुअली आउटवर्ड्स है, बराबर, तो इसलिए हमको FBI यूज करना है, B शुड बी आउटवर्ड्स, राइट, तो तुम्हारे तरफ वो फिंगर्स फोर फिंगर पॉइंट आउट करना चाहिए, और जो करंट है तो वो करंट ऊपर की तरफ हमको पॉइंट आउट करना होगा, जिससे हमको फोर्स का जो डायरेक्शन मिलेगा तो वो इस तरफ मिलेगा, देखो इस तरफ, rightwards मतलब. So we can show that also by using a arrow like this, which is directed rightwards. See it here. So this is going to be the force acting on this first conductor due to the current in second one, which will be denoted by FB.
AB. Okay, so FAB, which is directed rightwards. So both of these forces are exactly equal in magnitude but opposite in direction. Actually, they are the action reaction pairs which Newton have talked about in the third law. ओके ये जो है ये फर्स्ट कंडक्टर सेकंड कंडक्टर को खींचता है और सेकंड कंडक्टर फर्स्ट कंडक्टर को खींचता है and this that's why this force is called to be the force of attraction between the two current carrying conductors carrying the currents in the same direction. So we can say that whenever the two parallel conductors are carrying the currents in same direction, they just attract each other. ये बहुत important बात है समझने जैसी. Whenever the two current carrying conductors are kept at some distance apart from each other and they are carrying the currents in the same direction, then they will attract each other. The like currents always attract each other. What will happen to the unlike currents? Can you expect? अगर मान लो हमारे पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स है बट ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो ऊपर के डायरेक्शन में करंट कैरी करता है और दूसरा कंडक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर करंट कैरी कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा? सिचुएशन थोड़ा उल्टा होगा. ये देखो, अगर हमने सपोज यहाँ पे अगर रीजन ड्रॉ किया जहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा हो रहा है, तो वो रीजन सपोज यहाँ पे इस तरह से है, ठीक है. तो इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगा बता सकते हो आराम से? once again it will be in the same direction, that is inwards, right? ये देखो ये इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक इंडक्शन होगा जस्ट बाय राइट हैंड रूल, नो डाउट, ठीक है. तो ये हो गया मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन जो कि B1 उसको हम डिनोट करेंगे B1, राइट. और दूसरी तरफ अगर दूसरा जो हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे जहाँ पे सेकंड फर्स्ट कंडक्टर रखा हुआ है, तो वहां पे अगर हम मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड आउट करने के लिए ट्राई करेंगे तो कौन सी डायरेक्शन में आएगा वो? देखो ठीक से. यस, इट विल बी अगेन वंस अगेन इट विल बी इनवर्ड्स. व्हाई? बिकॉज ऑफ राइट हैंड रूल. राइट हैंड रूल फिर से यूज करो और हमको मिल जाएगा मैग्नेटिक इंडक्शन एक्टिंग एट दैट पॉइंट where the first conductor is kept here will also be in the inward direction like this, which is represented by this crosses here, and it will be of magnitude which is given by B2. Okay, इसको हमको B2 बोलना पड़ेगा. Yes, now if we apply the Fleming's left hand rule here on the second conductor, ये जो second conductor है जिसके अंदर current I2 flow हो रहा है, तो उसके ऊपर अगर सपोज हमने ये I2 करंट फ्लो हो रहा है इसमें से और इसमें से I1 इतना करंट फ्लो हो रहा है, बराबर है. तो इस सेकंड कंडक्टर के ऊपर अगर हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज किया तो देखो यहाँ पे FBI, ओके. तो B is going to be in the downward direction and inward direction, and I is going to be in the inward direction. I is going to be downward direction. So in that case we can get the force directed outwards, or we can say leftwards, rightwards. तो ये जो फोर्स एक्ट होने वाला है इसके ऊपर, तो वो रहेगा राइट डायरेक्शन में. Yes, so we can show that force by an arrow which is going to be in this direction. ये जो है इस डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट होगा. इस फोर्स को हम एक्सप्रेस करेंगे as FBA, okay. And at the same time, if we apply the similarly right hand rule, Fleming's left hand rule on this second conductor here, first conductor here, then we can get that the force will be directed leftwards, which is of magnitude FAB, okay. And this shows that the forces acting on both of these conductors due to the current in them will be outwards or away from each other, and this force is actually expressed as the force of repulsion between the two conductors. And that's why we can say that here the repulsive force is acting on these two conductors, which means that whenever the two current carrying conductors carry the currents in the opposite directions, then always they repel each other. So the unlike currents always repel each other and the like currents always attract each other, okay. तो and with the same force का जो expression है वो वही है जो हमने ऊपर डिराइव किया हुआ है. अगर आपको याद है देखो ठीक से, यहाँ पे हमने ऊपर डिराइव किया था उसका इक्वेशन.
The force between the two parallel conductors will be of same magnitude. That is given by this. See here. FAB is equal to mu naught I1 I2 L upon 2 pi r. This will be the equation for force acting between the two conductors, but it will be attractive for similar currents and it will be repulsive for the opposite currents. So this is the topic about the force acting between the two conductors, parallel conductors. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने डेराइव किया आज के लेक्चर में. So let us see the next topics in the next lecture. Okay, I hope all of you have understood all these things. So let us stop here. Thank you all of you.